Dr. Dahri for giving a brief about this workshop. The main purpose of this workshop was to mobilize the research culture in the university. At the first stage, we had started from Institute of Biotechnology and Engineering. And in that department, we had done a successful workshop of the 3 days, and where we have almost covered the 5 different areas of the biological science, where we have started from the PCR, then we have discussed the fermentation, electrospinning, tissue culture, etc. etc. So that was the belongs to the biotechnological techniques. Now in this session, we made this workshop. The theme of this workshop was more specific to the practical work, because in last workshop we had some complaint that we have not done so many practical work. So that's why in this workshop we focus on the more time on the practical work rather than on theoretical presentations. So first of all, I'm giving you my introduction. I'm Dr. Bhutto. I'm a product of the same university. I did MSc in microbiology, MPhil in biotechnology, PhD in chemistry, postdoc in biomaterial and tissue engineering. So in other words, you can say that I have expertise of different fields. So at that, what I am doing here, I am also working as a director of audit. The responsibility of a director of audit to deal with that office deal with the work is the research, innovation and commercialization. So it is a very big task. So now come to the talk, because I don't want to waste your time. The topic of today my talk is the biomaterial and tissue engineering. So when we talk about this presentation, we will discuss the biomaterials, their types, and the worldwide radical polymer market, where you can find the use of these polymers. This portion is very much important, because in this portion you all are connected. Either you are a botanist or a zoologist or from freshwater biology or from geology, you can use the different polymers in different applications. And the next one is the polymer specific application, and then multi-channel graphite fabrication by electrospinning. This is the technique. Although it is a very old technique, this technique was established in 1950, and then in 1970, almost 20 to 30 publications were appear. But after that, no one has done the work on this. But in 2000, in last decade, a lot of the publications are related to this field. Then I will discuss the biocomposite nanofiber for non-tissue engineering and curator in construction. So where we use the biomaterial in human body, these are the different products which normally available in the market and we use in our human body, from lenses to the simple aluminum clips. These are some other commercial products which are also made up of the different kind of the polymers. So you can also synthesize all these kind of the polymers in your lab. The classification of biomaterials is concerned, we have the major class of the non-biodegradable and biodegradable polymers material, then organic and inorganic material, and then we have the 4 major class: metal, ceramics, glass and polymers. And in polymers we have the synthetic polymers and the natural polymers. So most of the portion is utilized in our market, that is by the utilization of the synthetic polymers. However, the share of the natural polymers or biological polymers is low as compared to the synthetic polymers. So this was a summary of the forecast which was predicted in the 2013, that in 2020 the expected market will be the more than $4,000 million. But when we come to the past the 2020, the actual market is now more than 7,000 billions, not millions. And now this is the new forecast about the 2027. So it is expected that we will cross with the 12% of increase in our present, and hopefully we will cross the $31 billion per year. So you can see that how many persons or how many industries, how much
what is the scope of this field? Now, where we use the polymer in our body, we can use the polymer in different techniques. If either you are using the gene therapy, tissue engineering, or you are going to develop your devices or sensors, you can use these polymers in the organ repair and bone replacement and targeted drug delivery. These are the class examples of the non-biodegradable polymer like a silicone, nylon, polyurethane, etc. I will move it quick because there's a lot of stuff in here. And in the biodegradable polymers, we have the polyglycolic acid, polylactic lactocratinol, PCl, polylactic lactic acid, and PHP polyhydrobutyrate. So there's a, because most of the time the student asks me that, sir, what we do here, because if you go to purchase this PGA or PCl, their 1 gram is around 20,000 Pakistani rupees. Okay, so at least you will use 100 gram or 50 gram, so it increase the cost of your research. But this is PHP, polyhydrobutyrate. You can produce this polymer in your lab by utilizing the microorganism or by plant. So you can produce these kind of the polymer in your lab at the first stage, and then you can utilize it. Now, where you utilize and how you can utilize, I will show you in the next slide. The another class of the polymers is the protein, polysaccharide and polynucleotide, because the definition of the polymers means the repeating unit. Poly being many, vers being unit, the repeating unit. So in protein, in some protein, collagen or gelatin, we have the same repetition of the amino acid after a certain time. So we have put these polymer, these special kind of the proteins in the class of the polymers. The another one is similarly polysaccharide, by repetition of the Dextron compound if you are working with the starch, and polynucleotide sequence. So in natural polymer we have some advantages and some disadvantages. As far as advantages are concerned, they are similar or identical to the material in the body, so you can easily utilize these protein and carbohydrate in your body for making any kind of the biomaterial. They reduce the toxicity and inflammation, and they are functional at the molecular level and can be degraded by the naturally enzymes or physiological process. However, the disadvantages are concerned, they are significant, having the immunogenicity, because every weight of the protein or carbohydrates is vary from one person to another person. So that's why sometimes we have the problem of the immunogenicity. So where can you find the use of the polymer? The simple answer is everywhere. You can use this polymer in a different kind of the application and throughout your body, because your body is full of the different kind of the material. So you can select your material according to your need. You can do the tissue engineering, or you can produce the human body part with the help of the different kind of the polymers by utilizing their different kind of the properties. So they are easy to produce, and they are the biocompatible in nature. When we discuss the biocompatible, the definition of the biocompatibility is the ability of a material to initiate a appropriate biological response in a specific application. For example, if you want to produce your hair, so you are going to produce a cartilage bone, for example. So you have to use the polymer that has the more elasticity, and their degradation rate should be slow as compared to the other organ. Now, the biocompatibility of any material can be achieved when it depends upon the three components. The one is the patient, that in what kind of the patient you are going to utilize that particular material. For example, your patient is the baby, or your patient is the old age person. So obviously, the biocompatibility will be compromised in this condition. The second one, which kind of the material you are using, either you are using ceramics, you are using polymer, you are using some metal, or another is what kind of the material function you are expecting from this material. Either it will help in the regeneration, or you are planting any kind of the device in your body. So when all these three properties are synchronized at a point, that point is called as biocompatibility. So this is the one component. After checking the biocompatibility of the material, the next stage is the degradability of that material and mechanical property of that material.
These two properties are also related with the for the production of a specific function. आप जो proper function उससे expect कर रहे हैं कि ये material मुझे इस तरह का function जो है वो इससे मैं करवाना चाहता हूँ, तो वो तब आपको अचीव होगा जब आपके पास उसकी, for example, if you are using a PLCL for your bone repair, obviously you cannot do it, because if you are producing the utilizing the PLCL for your bone regeneration, the bone regeneration will take up more than 6 months to 1 year, but this material will be degraded, so you have to use the high concentration of the that polymer. If you use the high concentration of a that material for the production of a that particular biomaterial or scaffold, then obviously your functionality of a that material will be compromised. So polymer is the specific, we have the different polymers that are already being used in a different specific application in our body. Here you can see, and these polymers are also used in a pharmaceutical industry as a plasticizer, binder or disintegrant. The good thing is that these materials are already FDA approved material. So there is no restriction of these kind of the material, utilization of these kind of material in your body. So now, this is the second part of my talk, that is the tissue engineering. Because I have told you that polymers have the different applications. Now we will precise on the tissue engineering, that how we can use these polymer in our body or for the repair of our body. So based on the biomaterial, stem cells and growth factors are required, as you know, being a biologist, because our cells require certain kind of the nutrition, and due to the variability in the cell types, they have the different kind of the need, so you have to provide them that particular environment. Now, in a case study, here I am presenting the nerve tissue engineering, and later on we will discuss about the ureter reconstruction. Nerve injury is one of the most serious problems throughout the world, with direct impact on the quality of a human life. Only in the United States and Europe, more than 700,000 peripheral nerve injuries are occurred, and these injuries may be occurred due to the ischemic, thermal, or chemical, or any other kind of the physiological problem or aging factor. We have the two kind of our nerve system. One is the peripheral nerve system. Second one is the central nerve system. The peripheral nerve system has some sort of the regeneration capability as compared to the central nerve system. Central nerve system has the very limited regeneration capability. Very little, I am telling you. In peripheral nerve system, the injured nerve can be regenerated by implant of the autograft or synthetic conduct. Autograft, allograft, these are the terms, or synthetic conduct, and achieve the functional recovery when the length of damage is less than 3 cm. Normally, for example, if someone is going to work in the lab और आपके ऊपर की छुरी या कैंची गिरे, तो ये नर्व जो है, ये अगर जहाँ भी गिरी तो ये नर्व डैमेज हो जाएगी, रिजल्टिंग आपकी पूरी लाइफ जो है आपकी उंगली काम नहीं करेगी. तो नॉर्मली इस तरह के केसेस हमें ये जो भी आदमी दहशतगर्द के टेररिज्म के बाद ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बम ब्लास्ट में साउंड वेव की वजह से आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं. जब उनको रिकलेक्ट करके हॉस्पिटल में लाते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी लैब में जो है एक्स्ट्रा मौजूद होती है, तो वहाँ से ले लेते हैं सर्जन. लेकिन नर्व को वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो स्पेस 3 से 5 से 8 सेंटीमीटर का रिक्वायर्ड होता है वो हमें अवेलेबल नहीं होता. तो मार्केट में अवेलेबल हमारे पास जो है वो इस तरह की नर्व्स मौजूद हैं, जो कि इस तरह की जो कि हमने स्मॉल ब्लड वेसल्स की मदद से इस तरह की बनाई हुई है. या फिर सर्जन के पास जो एक ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर किसी का हाथ यहाँ से टूट गया या यहाँ से टूट जाके ब्रेक हुआ है, तो वो कहता है कि आप सारी ज़िंदगी ये उंगली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और वो यहाँ से जो है आपकी नर्व निकाल के वो यहाँ लगा देता है. ठीक है ना, सर्जन की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो यहाँ से नर्व ली जाती है वो पतली होती है, तो वो कहता है कि एक उंगली नहीं ज़िंदगी पर आपकी 2 उंगलियाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन फिर आपका हाथ मूव कर सकेगा, क्योंकि उसको आपकी बॉडी को नेक्रोसिस से बचाना है, तो मैसेज ट्रांसफर होने के लिए उसको कनेक्टिविटी देनी है. सो हियर यू कैन सी दैट ये मोर देन 1 नर्व जो है वो यूज हुई है सर्जरी में, जिसकी वजह से जो है हम उस जो भी हमारा बॉडी पार्ट है उससे जो है उसकी कनेक्टिविटी को मिलाएंगे. सो बेसिकली जो इंजरी होती है
वहाँ पे हमें ऐसी कनेक्शन होती है जस्ट लाइक अ ब्रिज, हमें एक ब्रिज की ज़रूरत होती है ताकि रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट का दोबारा ब्रेन से कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि स्पेसिफिक सिग्नल पास हो सके और जो कि एट द एंड जो भी रिजनरेशन है वो आपकी बॉडी को खुद करनी है, ठीक है। सो सिंथेटिक नर्व के लिए हम लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल अवेलेबल लाइक अ नेचुरल बायोपॉलीमर, सिंथेटिक नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट इन नेचुरल बायोपॉलीमर्स हमें फॉर एग्जांपल कोलेजन है, जेलेटिन है, लैमिनिन है, एल्जिनिन है, सिल्क है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन्स है, ये हमें अवेलेबल है, बट दे आर बायोकम्पैटिबल एंड दे आर मॉडिफाइबल, बट दे डज नॉट हैव अ मच सस्टेनेबिलिटी बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सिंथेटिक नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास सिलिकॉन है, एक्रेलिक पॉलीमर्स हैं, पॉलीइथाइलीन है, कोटेक्स पॉलीमर्स हैं, लेकिन ही इज हैविंग सम क्रोनिक फॉरेन बॉडी रिएक्शन ड्यू टू द इम्यूनोजेनिसिटी। सो सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास जो है पीजीए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीट्रेप्टेनॉल, पॉलीलैक्टिक ग्लाइकोलिक एसिड, these are FDA approved materials, so we can synthesize it. Now, how we can synthesize any body part? We having the different techniques or technologies. For example, the latest is something that is the 3D printing. हम 3D printing के अंदर जो है वो इसको पॉलीमर्स के सॉल्यूशन बना के डालते हैं और कंप्यूटर की मदद से हम इसे बना देते हैं, ठीक है। द अनदर इज जो इसका क्लासिकल वर्जन था दैट वाज द सॉलिड स्टेट, जो है हम लोग बनाते थे जस्ट लाइक अ मोल्डिंग। मोल्डिंग में हम पहले से सांचा बनाते थे और सांचे में पॉलीमर्स को रख के और उसके बाद उस तरह का स्ट्रक्चर बाद में हम उसमें से रिमूव कर देते थे। आइदर हम जो भी उसकी डाई बनाए वो आयनिक या हम डिफरेंट पीएच की मटेरियल से ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वहाँ से निकाल दें और फिर हमें डिजायर स्ट्रक्चर का मिल जाए। जिस तरह आप लोगों ने मोल्डिंग में देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, तो डाई होती है, डाई के अंदर उसको रख के और प्रेशर दिया जाता है, वो उसकी बॉल को अटैच होता है और बाद में डाई रिमूव हो जाती है। तीसरा, इस तरह के मटेरियल्स के साथ हमारे साथ शुरू में मैं पहले दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स इस तरह के मटेरियल हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। सो कमर्शियली अवेलेबल FDA अप्रूव्ड नर्व डिवाइसेस, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास मटेरियल आ चुका था और उसके बाद हमारे पास एक ऑलरेडी जो है वो मेथड अवेलेबल था। सो हमने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। फॉर एग्जांपल आपको कमर्शियली मार्केट में जो है वो इस तरह की शीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि सर्जन यूज़ करते हैं। एक नर्व और दूसरी नर्व के बीच में 3 से 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो जस्ट इसके दोनों किनारे मिला के बीच में सिल्क का फाइबर रखकर जो उसका स्विचर होता है उसको कनेक्ट करके ऊपर ये जस्ट उसने रिंग की तरह लपेटा और उसके ऊपर फिर दोबारा सर्जरी बनी। कॉन्सेप्ट ये था कि हम इसकी कनेक्टिविटी जो है करेंगे और जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली हमें अपने डिजायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दूसरा था कि हम लोग जो है वो सिंगल ह्यूमन्स के ट्यूब बना लेते थे, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम विद दीस पे आपकी जो एक्चुअल नर्व फाइबर्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व फाइबर, वो इट हैज द 3D स्ट्रक्चर, और उसमें इफरेंट और एफरेंट बैंड्स होते हैं और डिफरेंट इफरेंट और एफरेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिस फाइबर्स मौजूद होते हैं और जिसमें जो है डिफरेंट काइंड के सेल्स मौजूद हैं। एस्टर सेल्स हैं, सैटेलाइट सेल्स हैं, आपकी इसकी टाइप्स हैं, श्वान सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स मौजूद है, इवन ब्लड वेसल्स आर आल्सो, ब्लड सप्लीमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी स्पेसिफिक जगह दी हुई है नर्व के अंदर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह की चीज़ें, दैट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। उसके लिए हमारे पास एक जो टेक्निक जिसके ऊपर फिर हमने फर्दर काम किया कि नेटिव नर्व इज enclosed of an extracellular matrix that is the fibrous and porous। जो हमारा नॉर्मली सेल का एनवायरनमेंट होता है वो एक तो फिब्रस होता है, ठीक है, और दूसरा पोरस होता है, उसमें रेशे मौजूद होते हैं और उसमें जो है एविएशन और केमिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ को सॉलिड वॉल के साथ बनाएंगे, फिक्स मटेरियल के साथ बनाएंगे तो उसमें से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, जबकि सेल के अंदर कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So nanofiber scaffold fabricated by electrospanning provide a suitable environment for cell attachment and pollination because of a similar physical dimension as natural extracellular matrix. So what is electrospanning? Electrospanning is a remarkable, simple, robust and versatile technique capable of generating fibers with diameter down to the nanoscale. एक ऐसी टेक्निक है, बड़ी सिंपल टेक्निक है जिससे आप किसी भी पॉलीमर सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को जिसके अंदर विस्कोसिटी है और जिसके अंदर चार्ज है, दो चीज़ें हमें से रिक्वायर्ड है। विस्कोसिटी आप उसकी कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करके अचीव कर सकते हैं।
सो आपके पास कोई मिनरल्स हैं और किसी मिनरल को आप जो है वो किसी एक खास डायमेंशन में या फॉर एग्जांपल किसी खास 3D मॉडल्स में आप उसको बनाना चाह रहे हैं कि ये मिनरल्स इसी जगह से रिलीज हो सकें और बाकी जगह से उस डिवाइस में रिलीज ना हो, तो हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि हम उसमें पॉलीमर्स यूज़ करेंगे और पॉलीमर से उसका रिलीज लेंगे, प्रोफाइल स्टडी करके हम उसे इसको दे सकते हैं। और दूसरी जो है कि वो जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑब्वियसली अगर तो किसी भी केमिकल का बना होगा तो उसके पास चार्ज होगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो वी कैन यूटिलाइज दिस। A non-moving weight of the electrospin nanoparticle possesses a high porosity and a special interconnectivity well situated for the nutrients. Listen carefully, मैं इसमें जो है बेसिकली आपको सिर्फ टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इस इलेक्ट्रोस्पिनिंग टेक्निक के बहुत सारी एप्लीकेशन है, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है। आप जिस भी फील्ड में you can do or you can modify your experiment according to this. For example, microbiologist शुरू से जो है वो एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी नीम के अंदर बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी है, या आपके किसी भी मिनरल या जिस भी कंपाउंड में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी है। अगर अब आप जाते हैं उसकी पब्लिकेशन की तरफ तो वो ऑलरेडी नॉन पब्लिश है, तो आपको जो है हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में तक आपकी रसाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे उसी मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए तो यू कैन पब्लिश योर पेपर। लेकिन इससे क्या होगा और उससे क्या होगा, सेम प्लांट अगर वो जो 5 ग्राम या 5% सॉल्यूशन में जो एक्टिविटी आपको दे रहा है, जितना जोन ऑफ इनहिबिशन, इसमें वो लेस देन 1 ग्राम पे वो आपका एक्टिविटी होगा। सो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड दैट इज द योर नॉवेल्टी। और अब बेसिकली हम लोग सिंध यूनिवर्सिटी को हमारी कोशिश ये कि हम अप्लाइड साइंस की तरफ जाएं। तो किसी भी चीज़ की कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए आपको उसको कॉस्ट रिड्यूस करेगा इन फ्यूचर। अभी तो जो पीएचडी चल रहे हैं वो चल रहे हैं, हमारे पीएचडी सिनॉप्सिस के अंदर जो कमी है जो हमने नोटिफाई करवाई हुई है वो ये है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है ना। इवन मास्टर्स के आपके सिनॉप्सिस के अंदर ये आपसे अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैलकुलेट करवाया जाए तो फिर आप नॉवेल्टी को एड्रेस कर सकते हैं कि हाउ यूर वर्क इज सिग्निफिकेंट। और हमारे बहुत सारे पेपर्स रिजेक्ट होने की जो वजह होती है यही होती है कि हम सिग्निफिकेंस को हाईलाइट नहीं कर पाते कि इस काम की इंपॉर्टेंस क्या थी। यही हम प्रोजेक्ट राइटिंग में भी करते हैं और ये सो यू कैन यूज द मॉडर्न टेक्निक और जिससे जो है आप इस जो भी शॉर्ट कमिंग है इसको इस गैप को आप फिल कर सकते हैं। सो हियर अगर आप इसके सिर्फ इलेक्ट्रोस्पिनिंग टेक्निक को अगर आप आईएसआई वेब ऑफ साइंस के ऊपर लिखेंगे और आप सर्च आर्टिकल्स को करेंगे पर ईयर, सो यू कैन सी कि इवन पैंडेमिक टाइम में सन 2000 में थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन हमारे पास मोर देन 4000 आर्टिकल पर ईयर पब्लिश हो रहे हैं इलेक्ट्रोस्पिनिंग सिर्फ टेक्निक के ऊपर, और उनकी साइटेशन 4000 आर्टिकल की 1,60,000 एनिमल। So you can see that how many scientists are keen to see the importance of the electrospanning, और electrospanning में आए दिन नई चीज़ जो है वो हमें मिलती है। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना आसान है, इतना सिंपल है कि हमारी हर लैब के अंदर ही आ सकता है काम। This instrument is very simple. इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 is a syringe pump। अगर आपके पास HPLC मौजूद है आप इसका पंप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई एडिशनल पंप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पंप जो है वो जो अपनी लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने अपना बनाया है, ठीक है। तो मुझे जो है उसमें मैंने जो है जो ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स होते हैं तो उनको 16-16 घंटे जब उनका केस चल रहा है तो उसमें एक सिरिंज पंप यूज़ होता है, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में इंसर्ट करने के लिए एक दफ़ा सिरिंज डाल के और हम उसे टाइम दे देते हैं, तो वो अप टू 0.2 ml 0.1 ml पर आवर के हिसाब से पंप करता है, ठीक है, अप टू 50 ml पर आवर। तो उसमें क्या होता है कि टेक्नीशियन को खड़ा नहीं होना पड़ता, वो सिरिंज डाल के प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पेशेंट के वो उसको प्रोग्राम कर देता है, तो आस्ते आस्ते सिरिंज को पंप कर रहा होता है। और तो वो पंप जो है वो 40,000 रुपये का मुझे लाहौर से मिल गया था। सो जस्ट आप एक उस सिरिंज पंप लें और उस सिरिंज पंप के साथ आपको एक हाई वोल्टेज सप्लायर चाहिए होता है। तीसरा द थर्ड कंपोनेंट इज द कलेक्टर, उसकी जगह हम एल्युमिनियम की सिंपल एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं। सो यू कैन
So electrospinning is instruments is depend on the three components. The one is the syringe pump, the second one is the high voltage power supply, and third one is the collector. Collector